वन। ये कुछ 10 क्वेश्चंस मैंने कंपाइल किए हैं. If you want to test your biology knowledge, then you can test your biology knowledge here. How expert are you at biology? So these are, I would like to tell that these are some difficult level questions, not easy or moderate. And if you are able to do, let's say 8 out of 10 or 9 out of 10 or even 10 out of 10, then you are pretty good at biology. And if you get between 6-7, then you are average, and if you get under 5, then you are whatever you are, right? So let's see this question number 1. A body of melanoglossus is divided into 3 regions, right? So options are, option A is head, neck and trunk, number 2 is proboscis, collar and trunk, and number 3 is proboscis, neck and trunk, and the fourth option is head, neck and tail. So if we see the melanoglossus is an example of hemichordates, right? And hemichordates are worm-like creatures that are parasitic on fish, and their body is divided into 3 regions: the proboscis, and the collar, and the trunk. Right, give me a second. Not catching my pen. Where is my pen? So yes, I got my pen. Sorry for the time that has gone by. Okay, so here we have so if we look at this question, then we have these are, right, we discussed what these are. So proboscis, let's say this is a structure that is not good. मान लीजिए proboscis है, तो इसमें जो anterior region होता है that is proboscis, and the middle region is collar, and the posterior region is the trunk, right? This is trunk, this is proboscis, and this is collar, and these are hemichordates. Right? They are neither chordates and not they are the non-chordates, they are hemichordates, right? तो यहाँ पे जो इनके अंदर जैसे हम लोगों में क्या होता है, we have notochord. In vertebrates we have notochord, but they don't have notochord. Instead they have something called stomochord. What they have is stomochord, right? And that is a primitive form of notochord. I hope that question is clear, and let's move ahead. Question number 2. The non-motile male gametes of red algae are called. तो इसमें ऑप्शन है हमारे स्पर्मेटोजोइड्स, एंथ्रोजोइड्स, स्पर्मेशिया और जूस्पोर्स. तो रेड एल्गी में क्या होता है? रेड एल्गी में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, या फिर उनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इनके बारे में, रेड एल्गी के बारे में एक ख़ास बात ये है कि इनकी लाइफ में कभी, इनकी पूरे लाइफ में दे डोंट हैव एनी फेस दैट इंक्लूड्स flagella or any kind of moving appendage attached to them, neither in the gamete or neither in the gametophyte, neither in the sporophyte. तो यहाँ जो मेल gametes होते हैं, they are non-flagellated and they are called as spermatia. Right? Next question. Plant hormones that promote growth of sugarcane internode. तो ये हो जाएगा आपका gibberellin. Next question. Auxins are indole derivative synthesized from. तो ऑक्सिन जो है ये हमारा
derive होता है from the tryptophan, right? And for tryptophan synthesis, plants need zinc, which makes zinc a very essential nutrient for them. Next question, let us see the angiosperm seeds with perisperm. We know the angiosperm seeds जिनमें perisperm is what if the जो आपकी seed बन रही है, like we know in the seed, let's say this is the embryo sac, and then there outwards you have nucellus, right? That is a part of the mother, let's say sporophyte or the gametophyte, right? It's not the gamete itself but the maternal tissue, and इसके बाद हमारे इंटीग्यूमेंट्स होते हैं which later changes into, after fertilization they change into testa and tegmen, the outer seed covering. तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ सीड्स में एम्ब्रियो सैक जो सीड में चेंज होती है उनके अंदर some part of nucellus grows or remains in the seed, right? So that it is called perisperm, and its example include black pepper, and the second example is beet, right? Beet, cucumber. Let's move on. Colchicum autumnale is a member of Colchicum autumnale, जिससे colchicine हमको मिलता है, right? Colchicine. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. colchicine क्या होता है, ये जो होता है डिवाइडिंग सेल को मेटाफेज स्टेज में अरेस्ट कर देता है. तो अगर जैसे स्टडी की जाती है तो वो इसी फेज में स्टडी की जाती है आफ्टर creating your cell and its chromosome with colchicine. It is a member of the family Liliaceae. Okay, Liliaceae, that is the monocots. Let's move ahead. A second messenger molecule in cells which play a vital pivotal role in hormone action is. तो जैसे कि हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन्स कैसे एक्ट करते हैं, हार्मोन्स आते हैं ब्लड के थ्रू एंड देन वो टारगेट सेल्स में जाके या फिर टारगेट टिश्यूज के सेल्स में जा करके उसकी सेल्स के मेम्ब्रेन्स पे यू हैव द प्रोटीन हार्मोन रिसेप्टर्स. तो हार्मोन एंड दीज आर स्पेसिफिक, ये नहीं कि कोई भी हार्मोन जाके कहीं भी लग जाएगा. तो हार्मोन एंड हार्मोन रिसेप्टर्स आर स्पेसिफिक, उनका साइज इस तरीके से होता है कि वो उसी में अटैच होता है. तो यहाँ पे क्या होता है, दो तरीके के हमारे रिसेप्टर्स पाए जाते हैं. वन इज द मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स एंड द अदर इज इंट्रासाइटोप्लाज्मिक. तो दे आर फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस. तो ये जो होते हैं आपके सेकेंडरी मैसेंजर मॉलिक्यूल इन विच ये पूछ रहे हैं कौन सा जो है सेकेंडरी मैसेंजर रोल प्ले करता है. तो लेट्स से कि हमारा कोई ऐसा हार्मोन है जो, और ये हार्मोन्स क्या होते हैं जो ये इसमें जाके जो एक्शन पेश करते हैं इन आफ्टर इंटरेक्टिंग विद द जीनोम, दे आर योर स्टेरॉयड हार्मोन्स, बेसिकली स्टेरॉयड हार्मोन्स, एंड that include estrogen, progesterone and your testosterone. इसके अलावा आपका होता है आयरो पैरोक्सिन, ये भी होता है. इसके अलावा जो सेल न्यूक्लियस के अंदर जाके अपना एक्शन को प्ले करता है या कॉज करता है. और जो आपके मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स होते हैं, बाकी सारे हार्मोन्स के अलावा ये क्या करता है, वो आपके अटैच होते हैं आपके सेल पे लगे हुए सेल रिसेप्टर के साथ, जो कि इन टर्न आगे रिले करते हैं अपना मैसेज टू सेकेंडरी मैसेंजर with its signal, and these are in the form of CAMP, sorry, CAMP, that is cyclic number B, cyclic adenosine monophosphate, and it may be pi p3, and it may also be in the form of calcium plus iron, right? And I did see here inositol 145,546. I hope it's clear.
Next question, viola and oxalis produce two types of flowers. One is cascade flower and the other type of, तो यहाँ पे जो आपका कैस्ट्रो ये जो फ्लावर के टाइप्स हैं वायोला और ऑक्सालिस, इनमें क्या होता है प्लांट में उनके दो टाइप के फ्लावर्स पाए जाते हैं। वन इज कैस्ट्रोगेनस लेट्स कैस्ट्रोगेनस और दूसरा क्या होता है दैट इज टेस्टोगेनस। टेस्टोगेनस क्या होता है उनका जो बड होता है दैट नेवर ओपन्स अप अंडर दे आर बाइसेक्सुअल, सो उन्हीं का आंसर में से फॉलोइंग के सेम फ्लावर इस स्टिग्मा ऑफ दी ओवरी से जाके लग जाता है। राइट, तो ये हो गया हमारा प्लास्टिक फ्लावर विद आर क्लोज एंड अदर इज योर टेस्ट हो गया ना फिर दी आर वीक खुल जाते हैं इनके जो एंकल्स और जो फीमेल पार्ट द ओवरी दे आर स्टिग्मा दे आर एक्सपोज्ड as both are exposed to clusters, they are not exposed, they are closed in the bud. तो यहाँ पे उसने पूछा है एक तो टेस्टुअल फ्लावर्स में what are the other type is the closed flower which are called your cluster calyx flowers. Next question, let's see. The most primitive vertebrates belong to the group. Vertebrates का हमारे आते हैं what the first vertebrates, अगर हम बात करें vertebrates के भी ऊपर अगर हम जाएं तो हमारा आता है chordates, right? Chordates में क्या होता है chordates of three types, एक सबसे पुराने जो हैं हमारे यूरो chordates है ना, जैसे इनको हम च्यूनिपेटा भी कहते हैं, च्यूनिपेटा, right? Then you have your cephalopolyps, and then you have your vertebrates, right? तो वर्टिब्रेट्स में अगर उसने हमसे पूछा है तो वर्टिब्रेट्स होते हैं हमारे सबसे प्रिमिटिव होते हैं एग्नेथोस्टोमीज, जो कि क्या होते हैं दे आर जॉलस फिशेस, राइट, दे आर काइंड ऑफ जॉलस फिशेस। उसके बाद आए आपके contractile fishes, and then your bony fishes, and then your all the vertebrates. So in human beings, FSH and luteinizing hormone are secreted by. So these are secreted by the anterior pituitary. Anterior pituitary is also known as your pars distalis. Pars distalis, okay. और एंटीरियर पिट्यूटरी जो है आपकी वो 6 हार्मोन्स रिलीज करती है, राइट, टोटल 6 हार्मोन्स, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, luteinizing हार्मोन, थायरो थायरो थायरोक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, and then you have your growth hormone, and then you have your prolactin or adrenocorticotropic hormone, right? So these are the hormones secreted by the anterior pituitary। और आपका जो posterior pituitary होती है that secretes 2 hormone, vasopressin and oxytocin, right? So that was all for today. If you like these questions, kindly give it a thumbs up, and if you can like and subscribe the channel, kindly do that.